Am I audible? Can you hear me? Sir. Every students, can you hear me? Yes, sir. Okay. So let me wait for 2 minutes so that rest of the student could join. Okay, so we have waited, but nobody is joining. So let's start the class. Can you see the whiteboard? Yes, sir. So we have given some problem. Have you done the problem of not get? सबको पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? Can you hear me? Rahul Kumar, can you hear me? Yes, sir. We have given some problem in the last class. Have it is done to everybody? Do you do it in the home? Yes, sir. Yes, sir. 1 GHz, sir. Frequency. मैं पूछ रहा हूँ, मैं आंसर नहीं जान रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि किस किसने किया है, किस किसने नहीं किया है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो ये जवाब देने के लिए आप लोगों का आधा घंटा लगता है, मुझे मालूम है। हाउ मेनी पीपल हैज डन दिस problem in your home and how many people have failed to do this? I'm just asking. Abhigyan Yes, Aditya, Yes, sir. have you done it? Yes, sir. Alok Das, Yes, sir. have you done the problem? Those are No, sir. numerical. Aman Kumar, Aman Kumar,
Yes, sir. Have you done the problem? Yes, sir. The first one. Aman Kumar Singh? न्यूमेरिकल किए हो? No, sir. हिमांशु चौहान? सर आप किए हो या नहीं किए हो? यस सर किए हैं, फर्स्ट वाला हो पाया सर। जिन जिन व्यक्ति ने किया है वो अपना हैंड रेस कीजिए। सिर्फ 25 में से सिर्फ 12 किए हो। अच्छा, जो 12 किए हो वो बताओ कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ है या कंप्लीट किए हो? कहीं पर प्रॉब्लम हुआ है? ऋतिका कुमारी? फर्स्ट वन बन गया है सर। सेकंड वन नहीं बना? सेकंड वन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर ट्राई किए। सर सेकंड वन का 2N TPD आया है। हाँ, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो, कौन बोल रहा है? सर सेकंड वन में सर 2N TPD आया है। हाँ, तो सेकंड वन ट्राई नहीं किया या समझ में नहीं आ रहा है? सबको बोल रहा सर हूँ, ट्राई किया। अच्छा, सबको बोल रहा हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम करने में कोई तकलीफ हुआ है, किसी जगह पे आप लोगों को फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, वो बताइए, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, चुपचाप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं तो। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मैं क्यों बार बार आप लोगों को पूछूं प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आप लोग आप इतना बड़े हो गए हो, आप लोग समझ जाओगे। एग्जाम के टाइम में वही क्वेश्चन आएगा, क्या करोगे वो तुम देख लेना आप लोग। ठीक है, तो मैं अपना सिलेबस आगे लेके जाता हूँ। आप लोगों को बोल बोल के थक गया हो कि अब प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग बैठे रहते हो, बात नहीं करते हो, क्या आदमी हो आप लोग, क्या मालूम। So today we will discuss logic gates, और आज जो गेट डिस्कस करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एंड। Output is high that is one when all the inputs are high. This is the logic of AND gate. Output is high when all the inputs are high.
So first, let us talk about the symbol. What is the symbol? This is the symbol of AND gate. If A and B are the input, and if I take Y equals to output, then A dot B. So this dot is called AND operator. This dot is called AND operator. Another 3 input AND gate is there. So X, Y, Z, if 3 inputs are there, then F equals to X into Y into Z. So that is the structure of a 3 input NAND gate. Now if I take about the second point, that is truth table. What I told the truth table is output is high when all the inputs are high. So if I take 2 inputs, A and B, and the output equals to Y equals to A dot B, then the truth table will be what? How many combination for T input AND gate? How many combination will be? 4. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So what will be? Output is high when all the inputs are high. So here all the inputs are low. So this is 0. One input is low, one input is high, but not all the inputs are high. So this will be low. So one input high, one input low. So this will be low. So here the 2 inputs are high. So this is the truth table of AND gate. No problem, I think. No, sir. Okay. Next we talk about the 2 laws. First is called the associative law. We will check whether our gate follows the associative law or not. What is the associative law? Anybody knows? If there are 3 inputs, then as per the associative law, it says as A dot B dot C equals to A dot B dot C. So let us test whether this thing holds for our AND gate or not. Let us test it. Okay, so what we will take? We will take this one as X and this one as Y. So if I prove A dot X equals to Y dot C, then you can prove the total associative law. So let us take an example. What I take example? That A equals to 1, B equals to 0, and C equals to 1. Let us take this example and let us try it.
So what will be the left hand side? What is the left hand side? A dot B dot C in the bracket. This is the left hand side. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now put the values that I got. So I will write here 1 dot 0.1. How much it is coming? कितना आ रहा है? 0. 0. 1.0 इक्वल्स टू 0 हो गया। और इसी तरह हम राइट हैंड साइड को करेंगे। राइट हैंड साइड में मेरा क्या है? ए डॉट बी डॉट सी, तो वैल्यू बिठाओ, दैट इज इक्वल्स टू ए में क्या वैल्यू है? 1.0.1, that is equals to 0.1. How much? 0. 0. 0. So you can see the left hand side is equal to the right hand side. So we can say the AND gate follows associative law. So I can write follows the law. I can write follows the law. Next is our commutative law. What is the commutative law? Commutative law says that A dot B can be written as B dot A. This is the commutative law. So let us take an example. A equals to 1, B equals to 0. Let us take this example. So I can write A dot B equals to 1.0. That is equals to how much? 0. 0. And on the RHS we can write B dot A, that is equals to 0.1. So that is equals to how much? 0. 0. So you can see RHS and LHS are same. So what we can say? If RHS and LHS are same, so we can write commutative law. This is also AND gate follows the law. So I can write follows the law. So this is a symbol. This is a truth table. This is whether it is following the associative law or not, and whether it is following the commutative law or not. Everybody is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we are going to the next page. Okay. Now, next we will get the point of enable and disable. Next, we will get the point of enable and disable. Enable and disable. This is point number 5.
So if we take the truth table of an AND gate, what we will get? A, B are the input, Y is the output. So what is the combination? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 is the input combination, and that gives us the output 0, 0, 0 and 1. So now let us see, let us take a black box, okay? So in this black box, there are two inputs, A and B, okay? Two inputs I have given, A and B, and the output, what I get from it is Y. So this is my system. So let us depend that this system is our AND gate. Let us tell that this system is our AND gate. This system is our AND gate. So what happens? Can you tell me? Anybody can tell me? If I give here 0, if I give here 0, what will happen? Please, anybody tell me what will happen? चुपचाप हो, सुन नहीं पा रहे हो? हेलो, यस सर। तो Yes, अगर sir. मैं बी पे 0 देता हूँ तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे बताओ तो? 0 मिलेगा। No, हाँ, sir. मतलब आउटपुट पे हमारा हर टाइम पे एक फिक्स वैल्यू आएगा, हर टाइम पे एक फिक्स वैल्यू आएगा। इफ आई गिव b इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू 0 मतलब 0 अगर किसी भी जगह हम लोग देते हैं, a या b किसी भी जगह पे हम लोग 0 देते हैं, हम लोगों का आउटपुट क्या आएगा? 0. 0 आएगा। सो मतलब 0 is the value by which this operation or this thing is disabled. That means if I give 0 to this any of the input or 0 to AND gate input, that means my function or operation is disabled. Understand what I am telling? Yes, sir. Yes, sir. कब मुझे आउटपुट 1 मिलेगा? When I will get output 1. So both input 1 रह सकते हैं.
हाँ, जब बोथ एंड्स मेरा 1 रहेगा तब मेरा आउटपुट 1 आएगा। तो मतलब एक की वैल्यू अगर 0 से 0 तक जाए या एक की वैल्यू 1 से 0 तक जाए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर बी पे 0 आए। अगर बी पे 0 रहे तो कोई भी हलचल नहीं होगा एंड गेट में। मतलब क्या है? मतलब है एंड गेट इज डिसेबल्ड whenever I give 0 in any input. AND gate is disabled when I give 0 in any input. Understand? Yes, sir. Yes, sir. So 0 में अगर हम enable disable को बोले तो if I tell you what is the enable and the disable of AND gate, then you will tell 0 is the disable state of AND gate. अगर किसी भी एक इनपुट पे मैं 0 दे दूं तो ए पे वैल्यू 0 से 0 ही रहे या 1 से 0 रहे या 0 से 1 रहे, कुछ भी रहे, हमारा y पे फिक्स वैल्यू आएगा। That is what? 0. Understand what I'm telling? Yes, sir. Yes, sir. अभी इसको अगर चेंज कर दे, इसको अगर चेंज कर दे, इसको अगर चेंज कर दे और चेंज करके इसमें इनपुट हम लोग कर दे ए एंड बी, A and B, such that and the y is the output and y is the output, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग b पे वैल्यू दे देते हैं 1। तब देखो मेरा ये एंड गेट इनेबल्ड हो जाता है। क्योंकि तब y डिपेंड करता है किसके ऊपर? a और a बार के ऊपर। ठीक है, समझ गए क्या बोल रहा हूं? No, sir. बी पे 1 दे रहा हूं, तब आउटपुट क्या आएगा तुम बताओ? 1 आएगा। नहीं आएगा। अगर ए पे जो वैल्यू देंगे वही हमारा आउटपुट पे आएगा। तुम देखो बी पे हम 1 दे रहे हैं, ये कंडीशन देखो, बी पे 1 दे रहे हैं, बी पे 1 दे रहे हैं, 1 बी पे दे रहे हैं, तब आउटपुट क्या दिखा रहा है? ए का स्टेटस। Yes, sir. तो मतलब 1 देने से मेरा इनेबल हो जाता है और तब आउटपुट क्या करता है? आउटपुट ए का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोगों को दिखाता है। दैट मीन्स ए अगर होगा 0 तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0, और ए का वैल्यू अगर 1 आएगा तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू अगर हम लोग क्या देंगे 1 तो हमारा आउटपुट 1 रहेगा। ए का वैल्यू अगर 0 देंगे तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। ये नहीं होगा, ए बार नहीं होगा, क्योंकि ए के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 is the value
that enables the AND gate. 1 is the value that enables the AND gate and 0 is the value that disables the AND gate. 0 अगर कहीं पर भी दे दो AND gate के इनपुट पे तो AND gate का फिक्स्ड वैल्यू हो जाता है 0, कोई हलचल नहीं होगा। और अगर 1 देते हैं इनपुट पे तो हलचल हो सकता है, अगर ए के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर या बी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ए इक्वल्स टू 1 मैंने दे दिया तो फिर देखेंगे हलचल होगा। अगर बी में 1 होगा तो वही रिफ्लेक्ट करेगा, अगर बी में 0 होगा तो वही रिफ्लेक्ट करेगा, या अदरवाइज अगर बी इक्वल्स टू 1 हम दे देते हैं तो ए का जो वैल्यू होगा वही आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा। पर जब बी या ए किसी एक चीज को हम 0 कर देते हैं तो हमारा आउटपुट फिक्स्ड हो जाता है। So the enable for AND gate is 1 and the disable for AND gate is called 0. Understand what is enabling and disabling? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That means एक AND gate को enable करने के लिए, काम उपयोगी करने के लिए हमको किसी भी एक इनपुट में हाई इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है, और हाई वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. So this is that enable and disable. I think everybody has understand. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Next is unused input. So और एक चीज हो सकता है, आप यहाँ से भी बोल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अगर इन दोनों बिट को देखें तो आपको देखेंगे आउटपुट हमेशा 0 आएगा, और इन दोनों बिट को देखें तो आउटपुट बफर हो जाएगा। ए बिट अगर 0 होता है अपना एंड गेट के लिए तो जितना भी आप बी बिट दीजिए, मतलब 0 दीजिए या 1 दीजिए, अपना आउटपुट डिसेबल हो जाएगा। सो आई कैन राइट डिसेबल आउटपुट close to 0 if a is 0, a का कोई चीज ना, और अगर a 1 रहेगा तब हम लोगों का आउटपुट, अगर b इक्वल्स टू 0 होगा तो 0 मिलेगा, अगर 1 में होगा तो 1 मिलेगा। तो ये एक बफर की तरह काम करेगा, बफर नॉट और गेट एनेबल होगा और ये बफर की तरह काम करेगा। अंडरस्टैंड? सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0 is disable with
OP 0, okay, and one is enable / buffer. ठीक है? Yes, sir. Unused input. सर जैसे कि आप बी में इनपुट दे रहे हैं वैसे ही हम ए में भी इनपुट दे सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि हमने तो बता दिया है आपको इट इज कम्यूटेटिव, सो A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A, कोई प्रॉब्लम नहीं. So unused input in TTL logic, if any input is open or floating, it will act as one. And ECL यही चीज ECL में काम करेगा क्या? 0. Okay, this is very important. ठीक है, आप लोग को समझ में आया? Yes, sir. TTL मतलब क्या है? Transistor logic. हाँ, और ECL मतलब Emitter coupled logic. क्या? ECL के मतलब बताओ. आप लोग पूछ नहीं रहे, मैं लिख रहा हूँ. चुपचाप रहोगे तो पढ़ाई नहीं होगा, और कुछ भी हो सकता है. ये मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों का वीडियो लेक्चर नहीं है, ये पढ़ाई है. आप लोग चुपचाप रहते हैं तो कुछ नहीं हो सकता. TTL का मतलब है ट्रांजिस्टर लॉजिक. ECL का मतलब है एमिटर कपल लॉजिक. दिस इज कॉल्ड एमिटर
couple logic, and this is called transistor logic. Understand now? Yes, Yes. sir. Acha. In TTL logic, if an input is open or floating, it will act as one. ECL के लिए वो जीरो इस सब के काम करेगा. एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को. Just a minute, 1 minute. It's the emergency call. Sorry. Just I will mute. Okay, sorry for the disturbance. I was busy in receiving another call. Okay, so very sorry about that. So what I'm telling, unused input in TTL logic, if an input is open or floating, it will act as one, and initial it will act as zero. So now how can we represent the unused input in our AND gate? Let us see three ways of representing the input in. Okay, so what are the ways? Let me see. Those ways are, first of all, number one, I'll take another color. Number one, if there is a three input, 1, 2, 3, then I will take the last input as 1, A, B, and 1. Why I'm taking this one? Anybody?
Anybody, can So you tell me enable why? category. Yes, because the circuit will be enabled. Because if I connect it with 0, then the circuit will not enable. So that's why I'm taking 1. Or there is no logic, I'm taking 1 if there is an unused input. So like this is the first way representing, or directly we can connect it to the VCC or the supply voltage like this. I am connecting it to VCC. This is A, this is B, and this is Y. Or second way of representing the unused input can be that it will be short with another input like this. That also gives you the logic. That means A, and it is short. So output will be A into A. That is A as per the Boolean algebra using De Morgan's rules. So that will give you the output same. Next, and the last, you can do in TTL logic. What you will give in TTL logic? TTL logic, it will be connected with 1. Last number 3, we can use by TTL logic. And if in TTL logic, it is connected as floating is used as 1, but not for ECL, because ECL, what is the problem with ECL? ECL is ECL here. In ECL, it is 0. But if I connect 0 with the output, what will happen? If I connect 0 with the output, yes, it will be disabled. So I will not take the ECL logic. I will take the TTL logic and use that thing. So this will be a gate. Whatever. Just a minute, whatever. Yes, this will be the gate and this will be 1 unused input. So this is A, this is 1, and this is our output Y. So Y will be represented as A dot 1. So there will be no problem. If I multiply something with 1, I will get it 1. But I will not use the ECL logic. ECL logic will be not used, because if I connect it 0, then our AND gate will be disabled. So I will not use the AND gate logic. So these are the 3 procedures or 3 options by why which we can use the unused input. We can connect the unused input in a particular AND gate circuit. If such a way there is a unused input, means if my chip is a, I use the circuit where there are 3 input or 4 input gate, and I don't need the last 2 inputs, I only operate on the 2 inputs, then the last 2 inputs that are unused, or the last 1 input, it is a 3 NAND gate, then last 1 input that is unused, that can be substituted by like this. It can be sorted with a particular input, or we can connect it directly to the supply voltage, or we can give high input to it because it will enable the circuit. So any procedure you can obtain. Understand? Yes, sir. Okay. So that is the today's class, and hope you have enjoyed. I am giving another problem for you, that is a home task. Please do your home task, because if you don't do your home task, then you cannot be solving this problem very easily. So please do the homework at your home and try to solve it. I will this homework, I will take the submission of all this and logic gate homework in a particular assignment, and I will give the assignment to you. So no problem for that. So I am sharing the homework also with the with this. Just a minute.
जस्ट अ मिनट। तो ये जो होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग दोनों को ही बोल रहा हूँ, राहुल को बोल रहा हूँ और उधर इसको मुस्कान को भी बोल रहा हूँ। जो ये जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं हर दिन, ये टोटल एंड गेट का कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को असाइनमेंट के हिसाब से जमा करना पड़ेगा। एक गूगल सीट दे देंगे हम लोग, वहाँ पर गूगल सीट में गूगल क्लासरूम, वो गूगल क्लासरूम पे आप लोगों को A4 पेपर में असाइनमेंट हिसाब से जमा करना है। आई एम गिविंग एवरी डे 2 so your work is to complete all the assignment. Complete means collect all the assignment and tell everybody to submit it into the Google Classroom when I will after the logic gates chapter is covered. And I know the students, they are very careless, so please note it down, all the assignment that I am giving, please you too please note it down. So sometimes if the students will tell me, sir, I am not present in the class or I am not in that day, you can submit, help them with the new problems, assignment problems. And Okay. I will request Rahul and Muskan to write all the numericals that I am giving as home task in a particular page, and when I will give the assignment at that time. Please what please take a picture of that, all the assignments, means problems I'm telling, not answer. Please take a picture of that and submit in the group so that nobody can give an excuse that I was not present in that class or this class, like this. Understand, Okay. Rahul and Muskan? Yes, sir. Rahul is there. Yes, sir, but I am lateral student, sir. I'm not CR. CR कौन था? Regular student, sir. CR absent है, sir. Present नहीं है. अमन है? अमन, Yes, sir. आप उस राहुल को बोल देंगे कि हमने ऐसे ऐसे असाइनमेंट दे रहे हैं, तो उसको उसका ये मतलब मैंने बोला है उसको ये टोटली नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि जिस दिन मैं वो असाइनमेंट दूंगा टोटल में, तब उसको वो एक पेज में लिख के सबमिट करना है, मतलब ग्रुप में देना है। Okay, sir. ठीक है, उसको बोल देना, आज नहीं है, Okay, sir. उसको बोल देना कि सर ने आपको बोला है कि हर दिन का जो असाइनमेंट है वो आप नोट डाउन कीजिए, ताकि जब आपका मतलब आपको मतलब वो असाइनमेंट दे सर, तो कोई अगर बताए कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. और मुस्कान आप समझ गए? Yes, sir. Okay, so today's assignment is this, means today's homework is this. Please note it down, everybody. These are the floating inputs. This one, this one, this one. 3 floating inputs are there, or unused input. So you know what to do. Okay, so time is over. I will share this in the TeachMint platform also. So please do take this from there and solve this, because in the assignment time you have to submit it. Okay.
ठीक है, मैंने बात समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And this Saturday will be your from 3 p.m. to 5 p.m. There will be your digital electronics lab, which I cannot take yesterday due to network problem. So inform everybody. Thank you. You can leave. Thank you, sir.